You're watching Truth versus Hype. We're in one of the last remaining refugee camps spawned by the Muzaffarnagar riots, where the acute cold is turning out to be dangerous, especially for the very young. There's the danger of illness, even fatal infection. But there's the greater danger of a generation that has experienced such dislocation and is going to grow up in a polarized Uttar Pradesh. On a bitterly cold morning, Gulafshan, 12 years old, is sent to the water pump to bring back a bucket she can barely carry. Just one of the scenes from a lost childhood, washing dishes, feeding her little brother. This is not the life she left behind in the village of Charthawal, which her family fled 3 months ago. कौन से गांव से हो? चरथावल। और कौन से स्कूल में जाते हो? डीवी पब्लिक। डीवी पब्लिक? अच्छा, कौन से क्लास में हो? चौथी में। When a pile of firewood arrives at the camp, she is sent into the melee. The risk of injury for her and the other children outweighed by the risk of another cold night. It is at night that the cold claimed its first casualties. Like Parveena's daughter Sonia, who was born in this camp, 3 days later died in the early hours of dawn. जी ठंड की वजह से मरा था आज बच्चा। ठंड की वजह से? जी। कुछ दवाई वगैरह कुछ दे? कोई नहीं हुई जी। कुछ भी नहीं जी। Afsana's daughter, 2 months old, died at an hour so late there was no hope of seeking medical help. Afsana's concerns are for her other child, Sonam. इस लड़की का भी हो रहा बुखार और उल्टी दस्त। अच्छा, इसकी? हाँ, इस लड़की का भी हो रहा। बुखार हो रहा है? बुखार भी है, उल्टी दस्त पूरी रात हो ली, रात को भी दस्त कहीं दफा करा और उल्टी भी कर रखी। In the graveyard abutting Malakpura, the newest graves are also the smallest. सब नहीं है सर, ये सब 12-15 साल के बच्चे मेरे ना सर, बच्चे भी छोटे छोटे। One of the most recent graves is for Adil, the son of Anwar, 20 days old, born and died in the camp. 22 दिन का था जी। हाँ। ये पैदा हुआ यहीं गुजर गया ठंड से, निमोनिया था जी, और सर्दी से मर गया। कोई ऊपर का कपड़ा नहीं है, कोई झुग्गी नहीं है जी, कोई पानी टपकता है रात को, तो इसलिए ठंड से मर जी। 22 दिन का था। The report of child deaths have jolted the refugee crisis back into mainstream consciousness. An NDTV campaign to collect blankets and warm clothes yielded truckloads. On the same day, a team of doctors from Kerala arrived, sent by an Islamic charity. Almost all the children in the queue to see them complain of the same illness. क्या है बीमारी? इसका नमूने छाती तक खांस नहीं आता, सांस नहीं आता। अच्छा, और पेट में कुछ कमी सी है, खाना खाने के बाद बार बार लैटरिन जाती है। इसका नमूनिया ठंड लग रही है। इसका नमूनिया पड़ रहा है जी, गाँव से दवाई भी खुआ ली और इसे भी खुआ ली। क्या जी लैटरिन लग रही? अजी खांसी है, नजला है। इसका जी ठंड लग रही है, नजला इसका घना नमूनिया पड़ा है। She's having severe respiratory infection. Suprarenal infection. That's going to be. It's not a good sign for 4 months. So 4 months. See the kid is sick. The way the kid is sick. Okay. She's very sick. The cold can't be kept out by these tents, which drip dew all night. Even in the morning, the insides are wet. Some have lit fires inside the tent, which has its own dangers. Ayan, 2 years old, half asleep, came a little too close to the embers. बच्चा रात में जैसे ठंड होती है, तो ठंड की वजह से सेक रहे थे। अच्छा। इसमें कपड़ा चल रहा था, ये ऐसे नंगा ही था, वो इसको चिपक गया। वो सारा का सारा एकदम से नींद में वो गिर गया, मतलब बराबर में बैठा था तो नींद में गिर गया। Arkam too burnt his leg by wandering too close to the fire.
as did Anas. यो टंडी लेके खेल रहा था जी, वो चूल्हे में लगा रहा था टंडी, वो उसमें आग निकल के इसके उस पे पजामी फैल रहा था तो उसमें आग लग गई. But now a new fear stalks the camp's children of diarrhea. I think there is a diarrhea outbreak which should come very recently. For the kids, yeah? For the kids, yeah. Okay. Already I have seen around 10 to 15 cases of diarrhea. That means it's to flare up in a short time. Not surprising in the deeply unsanitary environment. A camp of 3,000 with only 2 toilet blocks. The toilets had to be shut down. The reasons evident when the doors are opened for our cameras. In the aftermath of the scramble for firewood, the very young are sent to sift through mud for leftovers. The most serious source of infection comes from these swampy, garbage-infested pits. The few sources of clean water for a thirsty camp comes from hand pumps like these, not too far from stagnant water. हमें पता लगा कि इसमें कीटाणु पैदा हो रहे. अच्छा, इसमें कीटाणु आ रहे थे? हाँ जी, बच्चे बीमार हो रहे, ठंड से भी, वैसे भी, पानी से भी. The camp has been settled and run by local communities and Islamic groups who say their resources are at breaking point. देखिए 7 तारीख में जब ये लोग जब दंगे हुए तो ये लोग इधर उधर भागे अपने घरों से अपनी जान बचा करके. कोई कांदले पहुंचा, कोई ईंखों में छुपा हुआ था. तो हमने सोचा कि ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो यहाँ पे इनका इंतजाम करा दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था कुछ इस तरीके से इनकी करा दी जाए. तो यहाँ पे किंकर खड़ी हुई थी तो यहाँ पे लोगों ने मिलके, इलाके के लोगों ने इनकी मदद की और यहाँ पे इसको साफ कराया और इन लोगों को यहाँ रहने के लिए जगह दी. But the crisis in Malakpur has been exacerbated by the fact that the state government believes overextending support to these tent cities will legitimize them, while the entire effort by the state government has been either to shut down these camps or pretend that they don't exist. It finally took a Supreme Court order to jolt the government into action. A team of government doctors finally arrives, but their reputation here is poor, known for dispensing only basic medicine. सरकारी वाले तो वही एक दवा देते हैं. अच्छा. एक काली बंटी सी और एक वो सफेद वाली. उसके अलावा कोई दूसरी देते ही नहीं हो. सबको एक ही मर्ज की एक ही दवा है सबके लिए, सबके. बट ऐसे जैसे जल गया उसके लिए तो कुछ अलग से करते होंगे. नहीं, उसके लिए हमने प्राइवेट में दिखाया. सबको ऐसे एक ही सन्नी दवाई दे दें. मेरा बुखार है उसको भी दे दियो, जला हुआ है उसको भी ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे देते हैं. देखिए सर, हम तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग को जो फैसिलिटीज़ है वो हम पूरे तरीके से पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं. तो क्या क्या जैसे दवाइयाँ जो रखी जा रही हैं, कैसे कैसी दवाइयाँ थोड़ा सुनते हैं. इसमें जो है आपकी मैक्सिमम सभी टाइप की बहुत मेडिसिन अवेलेबल है. निमोनिया वगैरह के हाँ, निमोनिया के लिए बहुत हमारे पास इंजेक्टेबल भी है और उसके अलावा जो है सिरप वीरप है. टोटल फैसिलिटीज़ हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते हैं उससे बेटर करें. But the government is still treating these camps at arm's length. The district magistrate says he needs official intimation of the death of children. It is very sad कि some children have died. लेकिन इसमें कोई भी आज तक ये कोई हमको ऑफिशियली अभी तक इंटीमेशन नहीं दिया कि साहब ये हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई, इसमें ये लापरवाही बरती गई है या ये है और ठंड पड़ रही है. इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दिया. कोई ऑफिशियल हमको, हमारे पास किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू में, लेकिन फिर भी हम लोगों हमने इसकी पूरी जांच करवाई है. आप वहाँ गए, आपने देखा? हमने देखा है सिचुएशन. उनके वहाँ ग्रेव्स भी हैं बच्चों के. ग्रेव्स हैं उनके, लेकिन ये जो विंटर काफ़ी शुरू हो गया है, चल रहा है जी, इसमें ठंड बढ़ेगी. इन लोगों को तो ये तो हम लोगों ने बहुत ही इनको समझाया, हर तरीके से इनको सेफ्टी का एश्योरेंस दिया. ये जहाँ से आए हैं वहाँ अपने यहाँ चले जाएं. The question of what is safer, huddled in a camp or a return to home, has locked the government in a bitter tussle with the refugees. The camps are home to about 4,000 Muslim families who have fled from more than 24 villages, and they say they're not convinced by the government's assurances and refuse to leave. But the state says the offer of not returning is open only to about 1,800 families from a cluster of 9 villages in Muzaffarnagar and Shamli, which had seen acute violence, deaths and houses burnt down.
each family is meant to get a compensation of 5 lakh rupees to vacate the camp and relocate to a safer area. The government says those who don't come from these 9 villages and are staying back are simply grabbing land. We have written the concerned district magistrate and other authorities to carry them back to their homes. They had come. The officials have come. They gave enough assurance, but they are not. Actually, they are in the hope that this land may be allotted to them, and they may settle here. But they're saying that why would they put themselves through so much hardship and difficulty only for grabbing land? They're saying this is a very unfortunate allegation against them that the government is making. Then why are they not returning? They say out of fear. No fear. If you say continuously that you are in fear, what is the remedy of it? We are giving police protection. We have set up police pickets in those villages. Irfan, father of Ayan, asks, would he put his child through this only for money? He says he grew up in a village with Jats and friends, and now he doesn't want to return, not simply because of fear, but because something has snapped. जब आप बड़े हो रहे थे आपके गांव इल्लम में, तो कौन से स्कूल में जा रहे थे आप? मैं जैन धर्मशाला स्कूल में जाता हूँ। जैन धर्मशाला स्कूल। कौन चला रहा था इसको? ये जाट लोग ही चला रहे थे। जाट लोग ही? जी। और जब आप थे वहाँ पे, तो वहाँ जो जाट के लड़के भी होंगे, जी, सब दोस्त थे आपके? सब दोस्त थे। बहुत अच्छा मेल भाव था। अभी भी क्या कौन थे आपके दोस्त? नाम याद है आपको? मेरे दोस्त था, नितिन था, विपिन था, और बहुत लड़के हैं जो मतलब जो जानने में जानकार है। अभी भी है? अभी भी है। वो जो है मतलब उनसे बातचीत नहीं हो पाती, सब कुछ खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये है, अब वो बात नहीं रही है जो पहले थी। तो आपके जो बच्चे हैं, हम मिले थे, एक का तो बेचारे का पैर जला हुआ है जी। अब वो किस किस्म के स्कूल में जाएंगे और क्या उम्मीद करते हैं? जी, उम्मीद तो यही करते हैं कि जैसे हम पहले से रहते हुए ऐसे रहना पसंद करते थे, लेकिन अब फिलहाल नहीं होगा ऐसा। अब कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, अब दिल में वो तमन्ना ही नहीं है कि सब इकट्ठा रह सके। हम तो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को जहाँ पे उसे तालीम मिले, सब कुछ मिले, लेकिन किसी का गलत संगत ना मिले। जैसे कि ये हादसा हुआ, ऐसा ना हो कहीं पे।